Good morning and Assalamu alaikum students. Today the date is 8 September 2020 and the day is Tuesday. We are in the chemistry class 9th as we have completed chapter number 6 which was about solution. There is an exercise. Let's have the review on the exercise. First question is about the MCQs, multiple choice questions. Only the right answer will be mentioned. Question number 1. MCQ number 1. Mist is an example of solution. A. Liquid in gas. Number 2. Which one of the following is liquid in solid solution? B. Butter. Number 3. Concentration is ratio of D. Both A and B. Which one of following solutions contain more water? D. 0.25 molar. A 5% weight by weight sugar solution means that D. 5 gram of sugar is dissolved in 95 gram of water. Number 6. If the solute forces are strong enough, then those of solute solvent forces the solute B does not dissolve. Number 7. If the solute forces are strong, which one of the following will show negligible effect of temperature on solubility? D. NaCl. Number 8. Which one of the following is heterogeneous mixture? C. Milk of magnesia. 9. Tyndall effect is shown by C. Jelly. Tyndall effect is due to C. Scattering of beam of light. Number 11. If 10 centimeter cube of alcohol is dissolved in 100 gram of water, it is called C. Volume by weight percentage. Number 12. When a saturated solution is diluted, it turns into D. Unsaturated solution. Number 13. Molarity is the number of moles of solute dissolved in D. 1 decimeter cube of solution. Now we have the short questions. Question number 1. Why suspension and solution do not show Tyndall effect while collide do? We have discussed it already. Because of the particle size. कल भी मैंने आपको बताया था कि जो सस्पेंशन है they can block the light while solution particles do not scatter because their size is very small, while collide can scatter because their particles absorb light. ठीक है, ये हम लोगों ने कल इसको डिस्कस कर लिया हुआ है. टेबल में भी इसका आंसर गिवन है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं. व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन? अगेन देयर पार्टिकल साइज. ये भी हमने कल डिस्कस किया है, आप इसको भी वहाँ से देख सकते हैं, आंसर वहाँ से कर सकते हैं. बट कीप इट इन वन थिंग इन योर माइंड डैट एग्जाम्पल्स शुड बी मैंशन. आई एम रिपीटिंग, एग्जाम्पल्स शुड बी मैंशन. Why does not the suspension form a homogeneous mixture? Answer. Suspension does not form a homogeneous mixture. This is because solute particles are large in size and remain undissolved. They form a heterogeneous mixture. Question number 4. How will you test whether a given solution is colloidal solution or not? Again, it is the Tyndall effect. Classify the following into true solution and colloidal solution. True solution, glucose solution, copper sulfate solution, silver nitrate solution are true solution. Colloidal solution, blood, starch solution and toothpaste are colloidal solution. Why we state paints thoroughly before using? Before using, we state paints thoroughly because to homogenize solute particles with the solvent,
Due to this, paint becomes homogeneous or uniform in texture, consistency. Question number 7. Which one of the following will scatter light and why? Sugar solution, soap solution, and milk of magnesia. Answer: only soap solution will scatter light because it has colloidal sized particle. This is due to the fact that colloidal particles absorb light energy and then scatter it in all direction. Question number 8. What do you mean by like dissolve like? Explain with examples. We have discussed it in the solubility point. आप solubility के टॉपिक में इस पॉइंट को वहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. हाउ डज नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट अफेक्ट द सोलिबिलिटी? हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में कि किस तरह से सोल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्वेंट को बॉन्ड्स टूटना ज़रूरी है. वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी. हाउ यू कैन एक्सप्लेन द सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन टू प्रिपेयर अ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन? सॉलिबिलिटी के टॉपिक में आपको सोल्यूशन के फॉर्मेशन में सोडियम क्लोराइड का टॉपिक वहाँ पर दिया गया है. ठीक है, नीचे सबसे लास्ट पैराग्राफ है, डायग्राम भी बनी हुई है. आपने वो सारा पैराग्राफ इसके अंदर लिखना भी है और याद भी करना है. Question number 11. Justify with an example that solubility of the salt increase with the increase in temperature. Again we have the factors. 3 factors थे. Heat is given out, heat is absorbed and no heat is involved. ये तीनों पॉइंट आपने इसके अंदर लिखने हैं. What do you mean by volume percentage? Again it's a simple answer. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं. द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंट. ठीक है, इसका आपने फार्मूला भी लिखना है और आपने इसकी एग्जांपल भी कोट करनी है. तो ये सारे आंसर हैं. दीज आर द सिंपल आंसर्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड देम इन द टॉपिक. जिनके आंसर थोड़े डिफ़िकल्ट थे या लग रहा था कि वो नहीं है तो वो मैंने आपको बता दिए, उनको आपने नोट कर लेना है. It was our overall today's lecture. Hopefully you have the understanding of the lecture. If you find any difficulty in understanding answer, you can highlight the problem and can ask. Thank you.